So contouring के लिए I'm going to use this contouring shade. This is my favorite one. This is Fashion Artist Swiss Beauty palette. And ये brush मैं use कर रही हूँ. This is Wet n Wild brush. So I'm going to use this. Okay. So wait. So now सबसे पहले हम color pick करेंगे. And हम इसकी application करेंगे like this. Okay, upward strokes में करेंगे like this. Okay, now you guys can see. So yeah, you guys can see. बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है. और सेम लाइक इस तरीके से जॉ लाइन पे. ओके डन फाइन. अब बारी आती है नोज कॉन्टोरिंग की. सो मैं यही शेड लेने वाली हूँ एंड देन मैं इसकी एप्लीकेशन करने वाली हूँ लाइक दिस अपवर्ड स्ट्रोक्स में. अभी मैं आपको दोनों लाइक साइड पे डिफरेंस दिखाऊंगी. यू गाइस कैन सी. सेम इसी तरीके से इस साइड पे करेंगे. एंड देन एक लाइट शेड लेके आप अपने नोज को इस तरीके से हाईलाइट कर देंगे. कोई भी लाइट शेड, कोई ये शिमरी शेड नहीं है, सिर्फ लाइट शेड है. दैट्स इट. फाइन. सी. सो ये हो गया है कंटूरिंग पार्ट कंप्लीट. ओके, सो नाउ ब्लशर पार्ट.